In the last session, we have been discussing about this product adding process of uh, this is a product adding process for any toy shop. It is an online toy shop, suppose, and we are trying to like add products onto it, and the products are there on the screen. This you can see this we have already covered some part in the last session, and we added this uh, high-tech Beast Mahindra XUV for this 499. And okay, so here it is showing 1599. So we should have shown there 1599. That would have been a better option. And then what we have to do is when we add, we have a database table. You can see we have a card table. In the card table, we have these elements on already there. So if there is one element in the cart and we start with our website, so it should show one instead of zero, isn't it? What we have to do when we are calling this index.php, let us see whether the index.php has included the header file or not. If it is not included, then we'll have to include that so that this should show the items in the cart. Okay, this should show the items in the cart. And we have to learn from here how we can proceed with it. And then we have to also create an admin panel for this, because whatever is the customers are purchasing, the admin must see the database and all the informations from the backend, and he can accordingly use it and add it. Now here, one important thing that I want to explain all of you is that uh, there is a JavaScript uh, code in any web page. Then there is a HTML code in a web page. Then there is a PHP code in the web page. So if I create a new, let me create a new file. I'll create a new file. I just want to make you understand everything. So suppose this is sample.php. Okay, so here if we have this is the HTML boilerplate, we write this is the structure of a web page, and here we can write some code in PHP. Okay, we can write some code in PHP. Then we can write some function here in script tag. Okay, in a script tag, we sorry, we add some function like the function that, and then there can be some HTML code as well here. That is what this is web page. Then suppose we have a input type equals to button, and on click we want to call that function. So we'll call it this way. Maybe we have a name,
and input type equals to text and ID is equals to source. Okay, so this is the structure of any web page. We have a script tag in the header. In the script tag, we have JavaScript. This is JavaScript. Okay, this is pure HTML. This is pure HTML. And then we can have some code here in PHP as well. Suppose we write code. Well, sure. Now, if we run this, this is by the name sample.php. So if I run this, if I come here, if I run this sample.php, you can see there's a sample page, then we have a text, there's the button, and there's the welcome to the show. This is coming through the PHP tag. Come back to the code again. Okay. Input type button, value equals to save. Here we have a VR plan, and suppose here we have a VR type. Now let me save this and let me refresh. Now you can see this is a sample web page. We have a text box, we have a save button, and this. Now when we click this save button, at present nothing is happening because we have not written the code to link this button click with this button. Okay, this is already written, but we have not written anything to understand whether this is getting activated, called or not. So now we have done it. If we come to the browser, if I refresh, if I type something, if I click, you can see this happening when we click. So these are the different parts in a website. We have a function, there's a JavaScript function. Then we have some pure HTML code. There's some pure HTML code. Then we have some PHP code. इतना होता है कोई भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो इतना इस तरह का कोड होता है. Now suppose we have a div with an ID equals to user txt. What is a div? Div is just a division or section or a part of a website. Now in this div, we want that whenever the user will click the button with the name of the user, it should print hello user, and welcome to the show is already printed. So we'll print hello user inside this div and through this function. So here what we want the name. How will this name come? This name will come from this text box, input type text, with this T1. So to access the value, we write document dot get element by ID, and here we give ID dot value. So whatever is the value of this text box with the ID T1, ID is T1. This value will come into name, and now we want that hello and name message should come into this div. So we have to access this div. We'll write this here, and the div value is called inner HTML. Text value is called value, div value is called inner HTML. So what we want in the inner HTML, we want hello and plus name plus we can give BR as well. Okay. Now see what is happening. We have a text box. The ID of this text box is T1. When we click this button, save button, F1 function will be called, and this F1 function will get the value of this text box into this name variable, and with the help of this document.getElement by ID, and with the help of document.getElement by ID, it will print some message into this
dev. Now let us save this. Now let us run this. Okay, and I enter here Neha. I click save. Nothing is happening means there's some error. So we'll have to go and check and correct the error. So name document dot get element by ID. Document dot get element by ID, which is seems to be correct. Okay, whenever this happens, what we have to do is document dot get element by ID. Hello, this name does this. Let us see if the name is coming properly or not. So I'll save it. I'll refresh it. I'll click the button. Neha is coming. That means this line is correct. The error is in this line. Document by dot get element by ID. Okay, the ID of this is user txt. Okay, this is user txt and inner HTML. Now I'll save this and I'll refresh here. I'll type Mina. Mina is coming and you can see hello Mina is getting printed here. So this is how each part of the website works. There is a JavaScript, then there is a form, HTML, and there can be some PHP tags as well. Now, if we want that this name has to be saved in a table, so this JavaScript function cannot connect with database in itself. So for that, what we have to do, we have to convert this function into a Ajax function. So what we have to do, we will have to change some content in this so that this becomes a Ajax function. Right now, this is not an Ajax function. This is a normal function. So to make it a Ajax function, I'll show you the code of Ajax function because we will be using a lot of Ajax. And I'll come to this. And this is a syntax of an Ajax function. Okay. Now in the Ajax function, what happens? These are the lines which is always required in a Ajax function. There's syntax like in C++ or in C program, we write hash include stdio.h void main everything. So similarly, this is written. And this part is executed and this file is called. Okay, so this function, now this function can call this PHP file. So let me take this code to our own sample code that we have just created. And this function, I want this function to work as a Ajax function. So what I'll do, I'll put the Ajax code here. Okay, I put the Ajax code here. Now, this value I'll add here at the top. So whatever is in the form I have got in this variable. Okay, and I'll not use the alert now. Now what we want, this name has to be saved into the database. So to call a database, we'll have to create a file here. Okay, suppose save name.php or whatever we want, save name.php. And we want to pass this name to that. So here we'll write name and here is this variable name. So now what we have to do, we have to create a save name.php. So as soon as these two statements will execute, it will skip this part. It goes to this part. Okay. उसके बाद क्या होगा? This save name.php will get this value, save into the file, and when it will come back, it will come to this part within the if. So here we'll give the user the message that your record has been saved.
hello, this name record saved. Okay. So this is how the flow goes on. So when we click this button, this function will be called. It will get the name. It will pass that name to the save name.php file. The save name.php file will save the name into the database. And when it will come back to this line number 21 within this if. So whatever message you want to give, you can give it here. So now we have to create a save name.php. So I'll quickly create a save name.php. Save name.php. And in the save name.php, I'll quickly copy what we usually do. We see add to cart. Like this, add to cart. So in add to cart, I'll copy this. Save name.php. I'll go to save name.php. I'll come to save name.php, and here in the save cart.php. This is the file we want. Where we want this save name.php. Save name.php. And here. Now what we are passing from that file, let me show that is the name sample. If you see the sample.php, so when we call the save name.php, what we are passing name variable. So in the save name.php, we'll write here, it's already written name.php. Then if some more value is passed, at the moment only name is passed, then we'll write insert into cart, price, name, whatever. This will go in the variable. Suppose in the cart I only add a name. It will go to the cart with only name value. So what this save name.php is doing, this is getting the name that is passed from this page. यहाँ से जो पास हो रहा है, ये save name में चला जाएगा. सेव नेम में ये इंसर्ट में चला जाएगा. इंसर्ट के बाद ये वापस आ जाएगा सेव नेम में, और वापस जब आएगा तो इफ के अंदर आएगा. पहले जब जाएगा तो यहाँ फॉर्म से ये वैल्यू निकालेगा नेम का और यहाँ चला जाएगा सेव नेम में. यहाँ से ये सेव नेम में गया, निकाला, डेटाबेस में डाला, लौट करके आएगा सैंपल में और ये आएगा तो मैसेज दिखाएगा सैंपल इज सेव. अब अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज वी रिफ्रेश, suppose the toy, we can give a toy name. The toy name is suppose car. Save. Hello car, it got saved. Okay, now if we go to the database, if we see the cart, see in the name we are getting car. Okay, so this is how, why I'm showing this, because this is the total crux of any website, any complex to complex website. This is what you have to understand. This is the basic concept that will be required in any website. The coding, the core coding will require these parts. See what we have done. In the body, we have a name text box. Then we have a button. When we click this button, we call this function. In this function, we get the name value that is there in the form. Then this is the code for Ajax. Why we need this code? Because we want this JavaScript to go to the back. JavaScript is a client side coding, and PHP is a server side coding. So to connect the client with the server program, we need this code. This code will call save name.php.
In the save name.php, we'll get the values, do whatever we want to do. Then we'll come back again here. So here, what we have to do, we have to give some message to the user that the work is done. So either we can display it in a div or in a text box, or we can give an alert also to the user that record saved successfully, whatever. Now suppose I comment this. I come here. Okay. I'll do the refreshing. Suppose next one is shape and click. See, when I click, it went to the database. The record is saved. This is coming back, giving the message record saved. Okay, so record saved message is there. Now, if we go to the database and if we browse it, we will see that Jeep is here. Okay, so this is, if you understand this part, you can do whatever programming you want, how however complex the program is, you can do this. Only this part you have to understand thoroughly. If you understand this, how the system works, whether you work in Node.js, whether you work in React, whether you work in JSP, whether you work in uh, the .NET, everywhere the same very concept is used. So if you understand this, then you are a pakka wala programmer. You can do anything. Up, what we have to do, we have to come back to our main programming, and we want to start from where we have left yesterday. So if we come back to the browser and if we come back to the index page, what is happening here is that in the cart, there are some items, but it is not showing here in the first time. When we click the view cart, see it is showing this high tech, and there is a car, there is a Jeep that we have added, but this car and Jeep does not have any photo linked to it. The price is not there, so it is not showing properly. We can remove it. This we have done in the last class, we can remove it. This also we have done in the last class. And now if we come to the uh, database, we can see that these records have been deleted. But the challenge is that when we are starting, at the time of starting, this is not shown properly. So what we have to do, we have to check the index.php, okay, why this is not getting shown here and how we can show it here. So let us come to the index.php and explore that file, and let us see what we can do. So in the index.php, we have a header.php. So the header.php is already there. Let us go to the header.php. Header.php. Okay, in the header.php, there's a remove item, then there is a apply coupon, then there is a sample that we have show total count. This is show total count, that should show the total number of elements there. The show total count is already there. So let us call show total count. शो टोटल काउंट फंक्शन है जो क्या कर रहा है, शो टोटल आइटम्स पेज में जा रहा है, शो टोटल आइटम्स पेज में जाकर के काउंट करता है कितने आइटम्स हैं वहां पे. लेट अस सी शो टोटल आइटम्स, शो टोटल आइटम्स डॉट पीएचपी. देखिए शो टोटल आइटम्स डॉट पीएचपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ट में सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग काउंट कर ले रहे हैं कितना आइटम्स है, उसको रिटर्न कर रहे हैं. तो ये हेडर में जब है फंक्शन, तो इंडेक्स में हम लोगों को कॉल कर लेना चाहिए. तो इंडेक्स में हम लोगों को कॉल करना चाहिए. जैसे अभी मैंने दिखाया था कि सैम्पल डॉट पीएचपी में एक फंक्शन है, तो इसको अगर हम लोग कॉल करेंगे यहाँ से ऑन क्लिक में, तब ये परफॉर्म होगा. अगर कॉल नहीं करेंगे तो परफॉर्म नहीं होगा. उसी तरह से इंडेक्स में हम लोगों को अभी शो टोटल काउंट को कॉल करना पड़ेगा. तो ये कहाँ पे है, दिस फंक्शन इज इन द हेडर, और we have to call it in the index.php. तो index.php में हम लोग body
लोड पे, यहाँ पे जैसे ही ये पेज लोड हो रहा है हम लोग कॉल कर लेते हैं बॉडी ऑन लोड। एक फंक्शन है बॉडी का ऑन लोड इवेंट है ये। और यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, टोटल शो टोटल काउंट to show. I hope this is spelling is correct. So let us confirm from the header.php show total count is the name of the function that we have to call. Let's show total count. In 10 minutes it will disconnect, so all of you will rejoin again. Okay. Show total count uh, in the index.php. Sorry, index.php show total count with the function. Now, if I refresh it, okay, not working. Oh, you can see that it has come. ठीक है, प्रीवियसली इट वाज नॉट कमिंग बिकॉज बॉडी के ऑनलोड पे वो काम नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, एक फंक्शन बना हुआ था बट वो कॉल नहीं हुआ था इस वाले इंडेक्स डॉट पेज पे। तो क्या हो रहा था कि जब हम लोग होम पेज से कोई आएगा, इसमें इंडेक्स में कुछ डाला हुआ है तो वो वहां पे नहीं दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ये तो हर एक पेज में कॉल होना चाहिए, तो इंस्टेड यहाँ पे इसको कॉल करने के, हर एक पेज का मतलब क्या है बता रहे हैं। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए कोई अबाउट अस में जाएगा, ठीक है, तो अबाउट अस से भी ये आना चाहिए, अबाउट अस से नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अब अबाउट अस में जाके लिखना पड़ेगा, फिर शॉप में जाके लिखना पड़ेगा, कस्टम में लिखना पड़ेगा। तो बेटर आइडिया क्या है कि इंस्टेड इफ वी कैन कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम द हेडर इटसेल्फ, तो हर जगह से इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, तो हेडर में ही इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सिंगल पेज। यहाँ पे करेंगे तो फिर दूसरा जितना पेज है, इसमें 50 पेज है तो 50 जगह लिखना पड़ेगा। लेकिन हर पेज का जो ऊपर का है हेडर पार्ट, उसमें ये चीज लिखा हुआ होगा, तो हम लोग हेडर में जाके कॉल कर रहे हैं। तो हेडर में हम लोग जा रहे हैं और हेडर में हम लोग चाहते हैं कि ये कॉल हो जाए। ओके, तो हेडर में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो हेडर में हम लोग चाहते हैं कि कॉल भी हो जाए। तो ये कॉल होने के लिए यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा शो टोटल काउंट। अगर हम लोग यहाँ पर हेडर में ही लिख देते हैं तो ये हर जगह कॉल हो जाएगा और फिर हम लोगों को अलग से नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने इंडेक्स से हटा दिया है, सॉरी, इंडेक्स से हटा दिया, इंडेक्स में ओके, इट इज नॉट इन द इंडेक्स बट इट इज इन द हेडर। तो लेट अस चेक। तो दिस इज डन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि क्यों हम लोग इसको यहाँ पर कॉल नहीं करके, इंडेक्स में कॉल नहीं करके, वी आर डायरेक्टली कॉलिंग इट इनटू द हेडर। तो हेडर में हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया, तो ये अब सब जगह पे आ गया। अब इसमें हम लोग और पार्ट ऐड करते हैं, जो कल हम लोगों ने पार्ट किया था उसमें करते हैं थोड़ा। होम पेज एक आइटम ऑलरेडी है और इसमें फर्दर एक आइटम हम लोग सपोज यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको ऐड पे पार्ट करते हैं। ये 2 हो गया। अब 2 होने से हम लोग यहाँ से चले जाते हैं व्यू कार्ड पे और ये दोनों आ रहा है, ये हम लोगों ने बनाया है लास्ट डे और यहाँ से रिमूव किया है। और यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कूपन। कूपन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों का एक कूपन टेबल हम लोगों ने बनाया है। कूपन टेबल में समर और स्पेशल है। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई भी हो रहे हैं। समर अगर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, ये अलर्ट हटा देंगे, यहाँ पे देखिए समर आ गया और यहाँ पर आ गया। अब अगर किसी ने समर को भी लगा दिया और फिर यहाँ पर स्पेशल भी लगा दिया,
सपोज तो क्या होगा कि ये 2 बार हो जाए 150, तो इज दिस करेक्ट? दिस कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट, यू कैन सी, बिकॉज 2 बार अप्लाई हो गया। अब अगर 648 है, अब फिर हमने समर एक बार और क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, ये एक बार और अप्लाई हो जाएगा, फिर क्लिक कर देंगे तो फिर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर कोई यूजर 2-3 बार क्लिक कर देगा और यहाँ से चेकआउट करेगा तो उसको सिर्फ 348 देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कूपन डिस्काउंट वैल्यू इज ऑलरेडी देयर, तो अब ये बोलेगा कि यू कैन नॉट अप्लाई कूपन। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं, लेट मी रिफ्रेश, व्यू काट कर यहाँ पे अब हम लोग का 898 आ रहा है। अब यहाँ पे सपोज हम लोग डाल रहे हैं समर, और एक हम लोगों ने यहाँ पे लगाया 898 से 798 हो जाएगा, 798 हो गया। अब अगर फर्दर इसमें कोई कूपन अप्लाई होगा अगर, तो वो एक बार सिर्फ होगा, और वो 150 वाला होगा तो 150 आ जाएगा, लेकिन वो 898 से कैलकुलेट होगा, टोटल से नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, बल्कि सब 898 से कैलकुलेट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि 150 वाला करेंगे यहाँ पर, तो ये 798 माइनस 150 कर देगा, तो दिस वी हैव टू करेक्ट। तो ये अप्लाई बटन के क्लिक की बटन पे हम लोग अप्लाई कूपन किए हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि लॉजिक क्या हम लोगों ने लगाया है। तो हम लोग आ रहे हैं अप्लाई कूपन में, क्या करना चाह रहे हैं एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अलर्ट कोड कर रहे हैं। पहले तो वो कूपन का वैल्यू, नीचे से जो कूपन का वैल्यू दिए हैं वो ऊपर लेके आ रहे हैं, जैसा भी सैंपल पे मैंने दिखाया था, जो टेक्स्ट बॉक्स में नाम दिया था वो नाम लेकर के आ रहे हैं, और अलर्ट में आ जा रहा है। उसके बाद ये एजैक्स है, तो ये एजैक्स से चला जाएगा शो कूपन में, और शो कूपन से ये वो वैल्यू उस कूपन का लेकर के आ जाएगा। तो ये वैल्यू उस कूपन का लेकर के आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये टोटल अमाउंट जो है उससे माइनस कर दे रहे हैं, टोटल अमाउंट से। तो हम लोगों को टोटल अमाउंट से माइनस नहीं करके, और वो जो सब टोटल है वहां से माइनस करना पड़ेगा। आइए क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों को। ये तो हेडर है, इसको रहने दीजिए। लेट अस कम टू let us come to index.php, index.php, index.php में हम लोग एकदम नीचे we have to come to the proper place. Let us जाना है हम लोग को टोटल अमाउंट पे। ओके, तो यहीं से हम लोग सर्च कर लेते हैं, फास्ट हो जाएगी। ये का कार्ड डॉट पी एच पी में, सॉरी, ये कोड कार्ट में लिखा हुआ है, कार्ट डॉट पी एच पी में, कार्ट डॉट पी एच पी। ये टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं।
टोटल अमाउंट, शिपिंग और सब टोटल, ये नाम हम लोगों ने रखा है टोटल अमाउंट, और एक टोटल अमाउंट ये प्राइस का है। तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टोटल अमाउंट हम लोगों को कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्राइस में। तो ये जो आईडी है इसको अगर कट करके हम लोग यहाँ से इस वाले इसमें डाल देंगे तो आई होप कि अब सोल्यूशन मिल भी जाए। इसको सेव कर लेंगे और अभी